Good morning, children. Today I am here to discuss with you the topic evolution. In evolution chapter, in the topic evolution, first let me recall the past knowledge which you have gathered in standard 10. In evolution, we will see that how simpler organism or simpler form of organisms get diversified into complex form. Evolution में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सिंपलर फॉर्म अर्थ जो पहले था वो उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म थे सिंपलर फॉर्म एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट आफ्टर 100 years or 1000 years, it is after millions of years these simpler organisms get changed into complex organism. ये हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं. तो in evolution you can see the picture of Charles Darwin here. He was a British naturalist and he gave he suggested a theory that is known as origin of species. He wrote a book. इन्होंने एक book लिखा. He wrote a book. The name of the book was The Origin of Species, and in that book, he focused 5 points. That is variation, overpopulation, survival of the fittest, natural selection, and origin of new species that we will read one by one. So, Charles Darwin, he was a British naturalist, and in 19th century, we can see his observations, and he was regarded as father of evolution. Next, Darwin's theory of evolution. You can see here, evolution or change over time is the process by which modern organism means descendant, means who are present on the earth, have descended from ancient organism. Evolution, just now I told you that evolution topic में ही हम लोग पढ़ते हैं कि ancient organism, simpler form, how they get diversified into complex organisms. ये हमारा आज का टॉपिक है. Next, a scientific theory is a well-supported, testable explanation of phenomena that have occurred in the natural world. The thing which we are saying that in evolution, complex organism changes into simpler organism changes into complex one. For that we have to give some evidences. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते जब तक उसका हम लोग क्या नहीं दे, साइंस में प्रमाण नहीं दे. Next, you can see a ship. Sometimes you will be asked the name of a ship which was used by Darwin. तो हम लोग याद रखेंगे HMS Beagle. Darwin was a naturalist. He went here and there through voice, means through ship area and his through sea area, and the name of his ship was HMS Beagle. याद रखेंगे इस चीज को, because sometimes in examination you may be asked
Now about voyage of Beagle. Generally, the journey of sea is known as voyage. So, date February 20th, 1831. I told you, Charles Darwin was doing his work in 19th century. So, the captain was Charles Darwin. Ship, the name of the ship was HMS Beagle, and destination voyage around the world. इन्होंने पूरे वर्ल्ड में उस समय में घूमा और फाइंडिंग्स evidence to propose a revolutionary hypothesis about how life changes over time. Means he was the first one who gave us the evidences that how organisms, the simpler form of organism, developed into complex one. Now you can see his voice. He went South America, Africa, then Australia. So here, now you can see pattern of diversity. So while moving from one place to another place, he observed different types of variations present in organism. And what are the evidences of these hypothesis, means evolution? In that, first we will read about paleontology, means study of fossils, living organisms and fossils. So paleontology is the branch of biology which deals with the study of fossils. So Darwin collected all the preserved remains of dead organisms, and which is known as fossils. And on the study of fossils, he gave some hypothesis. For example, Archaeopteryx. Archaeopteryx is a fossil which resemble reptiles as well as birds. Means that Archaeopteryx have teeth and tail just like reptiles. क्या था? Teeth and tail just like reptiles, and like birds they have wings and beak. तो उनको एक ऐसा फॉसिल भी मिला, या हम लोग देख पाते हैं एक ऐसे फॉसिल को जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, एंड दिस इज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एज वेल एज बर्ड्स. मीन्स वी कैन से दैट birds evolved from reptiles by seeing Archaeopteryx. तो वो उस तरह से fossil is a, यहाँ पे देख सकते हैं different types of fossils are there. उसमें से एक जो major fossil है that is Archaeopteryx, and that Archaeopteryx is a connecting link between reptiles and birds. Reptile के जैसा क्या है? Tail as well as tip, and like birds they have beak as well as wings. But now we cannot see Archaeopteryx. They get extinct. They did not adapted themselves in changed environmental situation, and in this way they extinct. Then the Darwin went the Galapagos Island. Galapagos Island is present in South America, and he showed that different type of finches are present there. Finches means birds.
And these different types of finches or birds, they have a common ancestry, means they are produced from original seed eating birds. किससे प्रोड्यूस हुए? सीड ईटिंग बर्ड से. बट ड्यू टू देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्यू टू देयर different food habits like insectivorous, some of them are insectivorous and some of them are herbivorous, and that is why their beaks get changed. So in this way, he suggested that, well, you can see here 3 different types of tortoise. These tortoise are show variations among them due to their different geographical area. They are inhabiting in different geographical area, as well as they have variations, but their ancestry is common. हम कह सकते हैं कि इनके डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के कारण, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के कारण, डिफरेंट फूड हैबिट ऑक्यूपाई करने के कारण ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे शो कॉमन एंसेस्ट्री. Tortoise and finches we have read. Yes, about Lamarck. Lamarck was also a French biologist, and he suggested use and disuse theory. Use and disuse theory. Although Lamarck was discarded by different scientists at that time, so he gave use and disuse theory, and according to him, he suggested that the organ which is used by the organism, okay, the organs which are used by organisms are well developed, and the organs which are not used have opposite effect. बात समझ में आ रही है? उनका कहना था कि ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन को यूज करते हैं वो वेल डेवलप्ड होता है, वो इनहेरिट होता है, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और जो यूज नहीं होता है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है या वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है उनके अनुसार. बट you can see here picture, original short necked ancestor of giraffe, and as they have had to feed on the leaves of the trees which are very high, so their neck become longer. इस तरह से इन्होंने इस अपने थ्योरी को सजेस्ट किया. उनके बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, मीन्स फिलोसफिकल जूलॉजी, लैटिन वर्ड है वो. तो उस बुक में इन्होंने मेनली यूज एंड डिसयूज थ्योरी पर फोकस किया, बट दैट लमार्किज्म मीन्स उनका जो कहा हुआ बात, that is discarded by August Weismann. August Weismann was a German biologist. He cut tail of mice up to 21 generation, and no tailless mice was produced. तो इनका जो लमार्क का थ्योरी था उसका सबसे ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने acquired trait, you have read in standard 10, inherited and acquired trait, means the trait which is developed by the organism during their lifespan is known as acquired trait, and the trait which we
which we get from our ancestor is inherited. तो inherited trait one generation से हम लोग जान रहे हैं कि the changes which are present in gene may transfer from one generation to another generation, but acquired trait, suppose कोई किसी ने डेवलप किया अपना बाइसेप्स ट्राइसेप, तो वो किस में नहीं जाएगा, उनके बच्चों में नहीं जाएगा. सो दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट. तो इन्होंने किस पर फोकस कर रहे थे, ये एक्वायर्ड ट्रेट पर. दैट वाज टोटली रॉन्ग, जिसको विस्मान ऑगस्ट ने डिस्कार्ड किया बाय कटिंग टेल ऑफ माइस अप टू 21 जनरेशन एंड नो tailless mice was produced. So this is about Lamarckism. इन्होंने भी, इनका भी इवोल्यूशन में रोल था, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं. Now about natural selection and artificial selection. When we are discussing about Darwin's theory, we will have to focus 5 points. Among these 5 points, one is natural selection. So let me tell you first point, that is about variation. Darwin said that similar type of organisms means species. Species को हम लोग कैसे define करते हैं? Species are those organisms which are similar and they can interbreed among themselves. So he said that species of different species having same species but organisms are different, they show variation. For example, you are reading, suppose 40 student, 50 student in a class, but all of you are not photocopy of your friend or any friend. तो इस तरह से superficial variation दिखता है ना? और वो उनका पहला पॉइंट था डार्विन का, वेरिएशन. देन overpopulation में he suggested that each organism produces large number of gametes in their lifespan, and next, survival of the fittest. Only those organisms will survive who get sufficient amount of space, ample amount of nutrition and proper environmental condition. They will survive on the earth. And from that, natural selection is connected. Nature also select those organisms who are well adapted in changed environmental situation. उन्होंने बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको नेचर भी सेलेक्ट करता है वो इस अर्थ पर दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन का. बेस्ट एग्जाम्पल इज कैमल. कैमल कैन लिव इन डेजर्ट and this camel has different type of adaptations. For example, they have hump. एक hump होता है in which they store water, and then in hump they store food. Excess amount of food is eaten by those organisms like camel, and these fat get stored in hump. ऊपर में ऐसे उठा रहता है उसमें. Then they can drink 40 or 50 liters of water at a time. तो वो पानी कहाँ गया? They are evenly distributed in the cells. वो cells में evenly distributed रहते हैं, and for 6 or 7 days अगर उनको पानी नहीं दोगे तो वो रह जाएंगे. Then their eyelashes is designed in such a way that sand cannot enter in their eyes. Then the food
is designed in such a way that they can walk on the sand. So all these things, food, eyelashes, their eating and drinking habit, make them adapted in desert area. तो नेचर भी उसी को सेलेक्ट करता है. Those have favorable variations, favorable changes. जीन म्यूटेशन हम लोग पढ़े हैं, तो जीन म्यूटेशन भी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव. सो निगेटिव will not negative adaptation, negative mutation will not allow organism to live on the or to survive on the earth, but positive adaptation means the adaptation due to which the organism is able to survive in changed environmental character situation they have selected by nature also, that is known as natural selection. And about artificial selection, in standard 10 you have read about artificial selection. Yahan dekho, artificial selection, nature provides the variation among different organisms and humans select those variations they find useful. Natural artificial selection का एक बहुत अच्छा example we have read in standard 10 that how farmers from a wild cabbage, है ना, एक जंगली cabbage से 5 different types of cabbage को produce किए by selecting their ovary, by selecting their leaves, by selecting their different parts. तो इस तरह से उस वाइल्ड कैबेज से जब ह्यूमन बीइंग 5 टाइप्स ऑफ कैबेज बना सकता है तो नेचर क्यों नहीं, है ना, ये एक सवाल हम लोग सोच सकते हैं. तो नेचर आल्सो सेलेक्ट ऑर्गेनिजम्स हु आर वेल अडेप्टेड. तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो वेल अडेप्टेड हैं वो अर्थ पर दिख रहे हैं. एंड द डायनासोर्स, है ना, दे आर now they are extinct. वो नहीं है आज. क्यों? Because their changes are not favorable. Evolution by natural selection, the struggle for existence. अभी बताए कि although organisms produce large number of offsprings, but only those offsprings survive which will get sufficient or ample amount of food, shelter, environment or proper environmental character, and then survival of the fittest. Those organisms survive who are well adapted, better suited for the environment or well adapted. Natural selection over time. Natural selection result in changes in inherited characteristic of a population. These changes increase a species fitness in its environment. So gradually, it is not all of a sudden. डी वेरीज ने कहा था कि जो changes है वो all of a sudden है. No, actually the nature or the changes, it is slow but continuous, and if it goes in positive direction, then the organism will survive better. Fifth point है डार्विन्स थ्योरी का origin of new species. उसमें उन्होंने किससे रिलेट किया? वेरिएशन से रिलेट किया. फर्स्ट पॉइंट से रिलेट किया कि ऑल्दो one species have different organism and they show superficial variations. अगर हम ही लोग 4-5 लोग खड़े हो जाएं तो कोई एक दूसरे के हम लोग क्या नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है. तो उसी चीज को उन्होंने फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से रिलेट किया कि आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स, है ना,
ये कोई 400-500 साल के बाद नहीं, 1000 साल के बाद नहीं, आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स वन टाइम कम्स व्हेन द डिसेंडेंट, मतलब जो अर्थ पर है ना, व्हेन द डिसेंडेंट बिकम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर। तो उससे फिर क्या बन गया, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नया स्पीसीज बना। और उसमें इन्होंने एग्जांपल दिया कि साउदर्न एप, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉसिल का, साउदर्न एप आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बट वन बोलेंगे कि वन स्पीसीज ऑफ साउदर्न एप, दे showed gradually change in their brain capacity, in their different habitat, and in this way they originated a new species known as human being, Homo sapiens, Southern ape। और अभी इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में कि हाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस get changed into modern man, that is Homo sapiens sapiens. Evidences of evolution, evidences मतलब प्रमाण, तो प्रमाण किससे मिल रहा है? फर्स्ट वन इज फॉसिल रिकॉर्ड, मीन्स this fossil suggest us or give evidence that some organism develop from another organism। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स है, आज भी उसका फॉसिल हम लोग कलकत्ता के जू में देख सकते हैं। वो उसमें हम लोग देखेंगे कि टेल भी है, टीथ भी है, बीक भी है बर्ड के जैसा, एंड विंग्स भी है। इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। बर्ड्स किससे बने? रेप्टाइल्स। जनरली क्लासिफिकेशन, जब इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, यू कीप क्लासिफिकेशन इन योर माइंड, है ना। हम लोग क्लासिफिकेशन भी उसी तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट सिंपलर वन एंड देन ग्रेजुअली वी गो टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और लास्ट में ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे थे। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिफरेंट environment also add some genetic change in the organism, or due to this geographical distribution we can see variations in the organism। then homologous body structure, homology में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे ऐसे, homologous organ, hand limbs, हैंड लिम्स मतलब हाथ, है ना। तो हैंड लिम्स, these have same structure। homologous organs are those organs having same structure but different functions। स्ट्रक्चर क्या है? सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसे सेम है? इन vertebrates when you see 4 limbs, the bones are ह्यूमरस, जो ऊपर का हाथ है ह्यूमरस, देन टिबिया फिब्यूला, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ये सभी वर्टिब्रेट में है, 4 लिम्स में। तो स्ट्रक्चर सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन कैसे डिफरेंट हुआ? फ्रॉग यूजेस दिस फॉर लीपिंग, चीता और हॉर्स for running or for bearing weight while running, then the whales for swimming, bat for flying, or for human being it is well designed so that we can do, doctor can do, surgeon or surgeon जो doctor होते हैं surgeon, they can do surgery and a farmer also can do। so इस तरह से हमारा 4 limbs designed है। structure same, homologous organ, structure same but function different, and similarities in early development। ये इसको हम लोग पढ़ेंगे कि embryological evidences,
फॉसिल्स देख सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन यहां देख सकते हैं हम लोग। दिस वन इज ह्यूमरस, ये येलो कलर जो भी है वो ह्यूमरस। टिबिया फिब्यूला, दिस वन ह्यूमरस सभी में है ना, ये ह्यूमरस। देन दिस वन हैज टू बोन्स, टिबिया फिब्यूला। ये है टिबिया फिब्यूला। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर सिमिलर बट द फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन कोई उसको स्विमिंग में यूज कर रहा है, जैसे कि वेल बैट उड़ने में, हॉर्स दौड़ने में, एंड ह्यूमन बीइंग फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो इस तरह से एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन अभी हम लोग देखें कि हाउ फॉसिल्स है ना, देन एनवायरमेंट ऑल्सो, ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्सो हेल्प्स इन जेनेटिक चेंज, देन होमोलोगस ऑर्गन, embryological evidences, and then vestigial organs. Vestigial organs are those organs which have no functions in an organism. For example, appendix. अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या है, वो फंक्शनल है। तो ये भी सजेस्ट करता है कॉमन एंसेस्ट्री। देन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंख में जो छोटा सा मेम्ब्रेन है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बिकॉज वी हैव आईलिड्स so there is no need of nictitating membrane. Then ear pinna, वो भी vestigial organ है, and then tailbone. So these are the vestigial organ. They also suggest common ancestry. ये भी किसको सजेस्ट करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को, मतलब इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम, सिमिलैरिटीज इन द अर्ली डेवलपमेंट, ये भी किसको सजेस्ट करता है, ये भी किसका एविडेंस है, कॉमन एंसेस्ट्री। मींस व्हेन वी रीड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट we will find similarities in the embryo. Now summary of Darwin theory. First जो हम बताए थे कि इंडिविजुअल इन नेचर डिफर फ्रॉम वन अनदर। स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज के दो या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फोटोकॉपी नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब सुपरफिशियल डिफरेंसेस है। देन organism in nature produce more of offspring, बताए थे, over population, and survival of the fittest, only those organisms survive which will get proper environmental condition as well as nutrient etc. Then survival of the fittest and natural selection, nature also select those organisms who are well adapted, and each organism lasts
Each organism is unique, each has advantages and disadvantages in the struggle for existence, है ना? ये adaptation के, जिसके पास पॉजिटिव एडेप्टेशन होगा वो सरवाइव करेगा, निगेटिव एडेप्टेशन होगा वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर जाएगा. Individual best suited for the environment survive and reproduce more successful. Means they give large amount of progeny on their on the earth, and their progeny survive on the earth. Species change over time. Many factors are there which are responsible for change, means which change in genes, and genetic change always transfer from one generation to another generation. ये बात याद रखेंगे. So this is for today, that much. Now I am concluding. Today we have read evolution, and if you have any problem, we will, in offline class, we will discuss one by one. Thank you, children. Have a nice day.